Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. No, no doubt. यार मेन प्रॉब्लम्स की आंदियां मैं लुक ही बोलदे हुंदे विच ते इन्हां नूं म्यूट करी जाना है। ना ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਊਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਹੋਸਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਆਉਣਗੇ 8 ਜਣੇ, ਉਹ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੂਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। और ज्वाइन कर रहे हैं ना, शायद कहाँ आ रहे हैं। ओके, बाकी पता नहीं। सर ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕੋਸਟ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਟ ਬਣਾ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Open Zoom. That's only for the Zoom meeting to Zoom. Zoom
हाँ जी, बलजिंदर सिंह। सर इनको को होस्ट बनाना है। हाँ जी सर, बस सर अलका शर्मा मैम ज्वाइन करेंगे, अब मैम को भी को होस्ट बना दीजिएगा। हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट है, जब किरण मैम प्रिंसिपल मैम ज्वाइन करेंगे तो उनको को होस्ट का सर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तब शायद मैं बोल रही होंगी। हाँ जी, थैंक यू सर। सर स्टार्ट कर दें, पार्टिसिपेंट तो हो गए हैं। ओके सर। सर अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मैम से पूछ के ना। ओके मैम, कर दे स्टार्ट। कितना टाइम हो गया? 11:05 हो गए। 5 मिनट और वेट कर लो। उधर भी होना था, स्टार्ट होना ना फिर। अब उनकी जगह पे प्रिंसिपल मैडम की जगह उन्होंने बोल देना। किन्होंने मैम? सविता मैडम ने। मैम नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में किसी ने नहीं बोलना, मैंने वो क्विज ही करवाना है। हाँ करवाओ, फिर तो स्टार्ट करें। लवली मैम इधर आना अभी। हाँ
Am I audible, sir? Am I audible, sir? Am I audible, sir? Am I audible, sir? Ma'am, you are audible. हमारे में भी यही होता है। Good morning to all the dignitaries and participants. A very warm welcome from PCMSD College for Women Jalandhar in the national webinar on National Sports Day in memoirs of Major Dhyan Chand and replications in contemporary times. In the remembrance of legend Major Dhyan Chand on his 115th birthday physical activity. Despite the fact that world today seems nowhere close to breaking the vicious circle of the most gruesome biological disasters of all times, COVID-19. Learning in such time becomes all the more essential. It indeed is a moment of esteemed pride that PCMSD College for Women Jalandhar is putting its best foot forward for its learners and teachers alike. By the time our chief guest and guest of honor join us, let us play a quiz on the National Sports Day webinar. I hope it will be of interest for everyone. It will be a very interesting activity for all of us. So I will put this link of quiz for all the participants. So you can play this quiz and I hope you will enjoy. So the link is shared by Dr. Lovely Sharma for everyone in the chat box. So you can play this quiz for the time being.
Yes, sir, I am audible to all. Yes, ma'am, you are audible. You are audible, ma'am. Dear participants, there will be a network issue from your end. So kindly check your network connection.
किरण ही है ना, किरण किरण मैडम I hope you all must have been surprised by this knowledgeable quiz. Owing to the efforts and relentless inspiration of our revered principal, Dr. Mrs. Sports has been able to organize this webinar. Dr. Kiran Arora is a colossal figure in the realm of academia and education. Her Herculean endeavors evident in bringing the institution to zeniths of glory. In propagating women education, no bounds. Ma'am, the institution shall remain indebted to you for bringing out the best in all of us. I wholeheartedly welcome you to address the session. Over to you, ma'am. Our worthy principal, Dr. Kiran Arora, ma'am. Ma'am, kindly unmute your mic. Ma'am, I request you to kindly unmute your mic. Am I audible now? Am I audible now? Am I audible to you all? Yes, madam, you are audible. Yes. Yes, ma'am, you are audible now. Right. Thank you so much. Before I interact with you all, I would like to express my deep sense of thanks to the Department of Physical Education and the teachers, those who coordinated with the Department of Physical Education, Madam Mrs. Sangeeta Sharma, Head Department of Economics, IQAC Coordinator, Madam Mrs. Alka Sharma, Head Department of Commerce, she too coordinated with the Department of Physical Education, Madam Mrs. Paramjit Kaur, for organizing this seminar webinar today and for making me participate in that. I very heartily welcome all the guests, those who are with us on the right now on the screen today. I very warmly welcome. I think Dr. Jaspal Singh Sandhu, Vice Chancellor of Guru Nanak Dev University, Amritsar. He was to be with us. I think because of his preoccupations in his office, he somehow could not manage to be with us. Anyhow, he promised us that he would be with us. He has really honored us. It's a matter of it's a different kind of thing that he somehow at the very last moment he had certain pre-engagement, something important, urgency came, and he could not participate. But he really honored us by saying that he would be part of this webinar. I very warmly welcome and express my deep sense of thanks to Dr. Shweta. She is a guest of honor today. She is professor and head Department of Sports Sciences and Medicine of Guru Nanak Dev University. Dr. Sukhdev Singh, he happens to be the special guest. He is professor and head Department of Physical Education of Guru Nanak Dev University, Amritsar. Mrs. Rajbir Kaur, she is renowned athlete. She is Arjuna awardee in hockey, and she happens to be the former Indian hockey captain. And we feel proud to have her with us. My welcome is due to Dr. Rajiv Chaudhary. He happens to be the resource person. He is professor in the Department of Physical Education. He happens to be the Dean Student School of Studies in Law, and he's from Raipur, Chhattisgarh. Chhattisgarh and Punjab, they all have joined together. I very warmly welcome Dr. Nishan Singh Deol. He is a panelist. He is from Punjabi University, Patiala. So we have people, resource persons, panelists from all the states of India, like I have made a mention of Chhattisgarh, then Patiala, of course Punjab, and then Guru Nanak Dev University. Dr. Baljinder Singh Bal, he happens to be the assistant professor from the Department of Physical Education, Guru Nanak Dev University, Amritsar. He is a recipient of
both minor and major research of this project initiated by University Grants Commission. A great and very sound academician he is, and I very warmly welcome him. I very warmly welcome Dr. Amandeep Singh. He too is a panelist. He is assistant professor from the Department of Guru Nanak Dev University, Amritsar. Dr. Harmanpreet Kaur. She too is a panelist and she is associate professor from lovely professional university, Fagwada. I welcome you, madam. Then we have Dr. Jatinder Sabi. He is sports journalist of Ajit newspaper, and he has many achievements to his credit. We have Mrs. Baljeet Kaur. She happens to be the senior SAI hockey coach, NIC Patiala. I very warmly welcome all of you for sparing your valuable time to be with us today. Since we are going to celebrate the 115th birthday of Shri Dhyan Chand ji, and whenever we celebrate something, whenever we dedicate that particular day to the memory of somebody, what comes to our mind is that we try to imbibe the very traits of that very personality. I personally do like this. I am so impressed. For that, my thanks are due to Madam Paramjeet from the Department of Physical Education of SD College only. When I was just, reading about Dhyan Chand ji, what came to my mind was he was from army. He was a major. And when he joined army, then he was not as good a player of hockey as we expect him to be. Right? Since he has a passion to play this particular game, what he was doing was during night time. Now we have the time, we have big sports complex with floodlights and all. But quite a number of times matches are organized during this, twilight, evening time, night time, because that makes no difference. Even the twilight and these, lights, they, convert night into a day. But this Shri Dhyan Chand ji, he was such a kind of person. I'm talking about 115 years ago, as we are celebrating his 115th birth anniversary. And he used to wait for the moon, that when the moon comes, he will see the light, then he will be able to play. See his commitment, his devotion, his dedication. That also makes us feel that if we are determined, if our willpower is strong, then nothing else comes on the way. No obstacle comes on the way. Because otherwise, sometimes we make excuses. We don't have this, so we can't play. How can I play? Throughout the day, I'm busy in my job in the army. So how can I play during late evening or when there is no light? If somebody is to make excuses, this is enough. But this gentleman, he was literally waiting for the moon to come so that he gets the light. That is why he has been named as Dhyan Chand. Otherwise, we pronounce it as Chand in Hindi. But we call it, I think we need to say Dhyan Chand. He is the gentleman who was waiting for the moon to come so that he is able to, play with all enthusiasm, with all his passion, with devotion and dedication. So I think those who are right now present on the screen, we need to learn this particular aspect of Shri Dhyan Chand's personality, that how passionate he was. That clearly shows and makes us learn to where there is a will, there is a way. If we are committed to do something, then whatever may be the handicap, if our willpower is strong, then it will not, come as an obstacle. So this is a beauty of this phrase. And all the great personalities, they try to inculcate the very spirit behind learning something, the very spirit behind the passion. So it is our passion. If we are passionate, that makes us work, and then we rise above all the excuses, all the limitations, and all the obstacles. So I think this lesson is enough. I think my students too are
right now linked on this program, then they need to learn that whatever may be the handicap on the way, never bow your head. You should always feel that we should always, try to go above the clouds. I always tell my students that I've heard the phrase sky is the limit. I say even sky is not the limit. You can go above the clouds also, provided you have the will to do something. I'm more than confident that the kind of speakers, resource persons, panelists, those who are with us right now, their talk is going to make all the difference. The talk on which they are going to deliver their talk on, Shri Dhyanchandji, I'm sure that we all will be very enlightened, and I feel that after this, webinar is over, we'll be a different kind of persons, because the kind of learning which will take place after listening to these personalities I've made a mention of, and particularly the personality we're going to talk on, such a great motivating force, inspiring figure, and we will definitely be enlightened. And I once again express my deep sense of thanks to all the, dignitaries, all the resource persons who are attached with us. We will ever remain grateful to you for sparing your valuable time to be with us. And my thanks due to the Department of Economics and Commerce and Physical Education in particular for making this, talk a very successful talk. Last but not the least, I think I should not forget the contribution of Dr. Jaising. He is from the Department of English and Foreign Languages, Hyderabad. He always comes forward. He is such a kind of personality that whatever you say, whenever you ask him something, it may be an order. He somehow manages. He has in his life, he has never learned to say no to anybody. His reply is always positive. It is always yes. Again, it's a matter of what we think we become. If we know that we are to come forward, we are not to say no, then providence plans the things in such a manner that you are ultimately able to have the things in your way. I mean, it's always yes from his side. For that, I, on behalf of my governing body staff and students, convey my heartfelt thanks to Dr. Jaising, for being host of this program. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It is our privilege to have Mrs. Rajbir Kaur with us, our special guest of the day, who is former captain of the Indian hockey team, popularly known as Golden Girl of Hockey. She is the only female to have represented India in 4 consecutive Asian Games from 1982 to 1994. She has been honored by many organizations for her achievements in the field of hockey. Now I request our Golden Girl of Hockey to address the participants. Hello. Over to you, ma'am. मैडम को उन्होंने बुलाया है, वो भी कॉलेज आ रहे हैं, आपके साइन हो जाएंगे.
Rajvi ma'am, you are audible now. ਹਾਂਜੀ Ma'am ਤੁਹਾਡੀ hello ਹੈਲੋ ma'am ਤੁਸੀਂ audible ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ visible ਹੈ. You may ਵੀਡੀਓ start. ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹੈ Ma'am ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. Ma'am, I request to address our participants. Ma'am, you are audible. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ. ਹੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 115ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਿਟ ਰੱਖੋ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you, ma'am, for your valuable words. Now I would like to invite Dr. Rajiv Chaudhary, who is presently working as Professor in Physical Education, Dean Student Welfare, Head School of Studies in Law, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh. Over to Dr. Rajiv Chaudhary, sir. Thank you, madam. Thank you. Am I audible? मैडम मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you, madam. Thank you. Thank you so much, sir, for joining with us. Good morning to all. Yes, sir, you are clearly audible. Respected organizers, participants, friends, ladies and gentlemen. As we all are aware that we are celebrating National Sports Day, at the very outset, I would like to express my sincere thanks to organizers for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I am directed by the organizers, especially by Dr. Paramjit Kaur, to speak in both the languages, that is English as well as Hindi. So I will speak in both the languages, English as well as Hindi.
I am also directed to speak on fitness level. Dear friends, we are facing this pandemic, and in this pandemic, this year we are celebrating this National Sports Day. Before this pandemic, we are free to do any type of activity, but nowadays we are living some restrictions, in some limitations, or we can say that we are living in a bubble, we are living in a protective layer, and we have only two protective layers. First protective layer is by improving our immunity, and our second protective layer is to take precautions, सावधानियां बरते, ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए। केवल हमारे पास दो ही ये रक्षात्मक कवच हैं, और हम यह भी जानते हैं physical activities and sports plays a vital role to improve our immunity, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को इस पेंडेमिक में, इस विश्वव्यापी महामारी में सामना करने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। खेल में सहभागिता बहुत अच्छी माध्यम है। So I will discuss about fitness level, the concept of fitness, since this topic is associated with the field of sports. Madam, is it visible? Yes, it is visible, sir. On full screen, madam, full screen. Yes, sir. It's visible on full screen. Okay, thank you, madam, thank you. I will speak as per the directions of organizers. I was directed to speak on physical fitness awareness with respect to current scenario. As I have explained earlier that, जैसा कि अभी मैं आप सबके सामने बता चुका हूं कि before this pandemic we are free to do any type of activity, हम पूरी तरह स्वतंत्र थे, किसी भी प्रकार की गतिविधि में, किसी भी प्रकार के खेल में सहभागिता कर सकते थे। But nowadays we are living in a protective layer. आज के दिन हम एक रक्षात्मक कवच में जी रहे हैं, और रक्षात्मक कवच हमारे पास केवल दो ही हैं, जिसकी चर्चा अभी हो चुकी है। एक तो हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं, और दूसरा हमारे पास चारा है जो कि प्रिकॉशंस का, सावधानियां बरतें। Otherwise that would lead to doctors, not only lead to doctors, we can assume the results of this if we do not follow these two protective layers. Since my presentation is centered around fitness, how to improve fitness, particularly for sportsmen. So my presentation outlines are, first I will discuss about the concept of training load. Since we do different types of training sessions, हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्र करते हैं, तो थोड़ा सा बात करेंगे ट्रेनिंग लोड की, प्रशिक्षण भार की, कि what do you mean by load। उसके बाद ट्रेनिंग इफेक्ट्स की बात करेंगे कि यह जो हम ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण के सत्रों में सहभागिता करते हैं, तो उसके प्रभाव क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। And this is the third is the most important part of my presentation. ये मेरे प्रस्तुतिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के सिद्धांत, कि किन किन सिद्धांतों पर आधारित हमें प्रशिक्षण सत्र करना चाहिए। नेक्स्ट इज moderation in training. I will discuss about moderation in training also, and after that I will discuss about open window theory, कि what do you mean by open window theory। पहले भाग से शुरू करते हैं। I will start from the first part, training load। एक सामान्य सी परिभाषा से शुरू करते हैं। I will start from a small definition, a standard definition, it is not given by me, it is given by eminent personalities from the field of physical education and sports sciences. So training load is a bodily or nervous demand made on an organism caused by well-directed motor stimuli. It means it is a demand, training load is a demand, it is a mental demand as well as a physical demand. It is given to an individual, that is a sportsman, who is interested in participation, and it is given by different motor actions, by the help of different movements, maybe jumping, running, climbing, etc. But the essential part of this definition is it should be well directed to achieve optimal effects. So this training load is subdivided into two types, two parts.
inner load and outer load. Now I will discuss about what do you mean by inner load and what do you understand by outer load. बाह्य भार और आंतरिक भार, इस प्रशिक्षण भार को दो भागों में विभाजित किया गया है. अब इनर लोड का अर्थ क्या है और आउटर लोड का अर्थ क्या है, इसकी बात करते हैं. इनर लोड मीन्स the internal changes that takes place due to outer load. जो हम बाह्य भार करते हैं, हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन होते हैं, these are the examples of inner load. For example, increase in the heart rate, increase in the respiratory rate, etc. But I will not discuss in detail about inner load, but I will discuss in detail about outer load. बाह्य भार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. Outer load is also subdivided into two subcategories, intensity and volume. क्योंकि जो मेरे प्रस्तुतिकरण का जो आगे का भाग है, उसको ठीक से समझने के लिए इन कुछ शब्दों को जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन्स स्पीड ऑफ वर्क डन, कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो लोड ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण में सत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किस गति से किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी. सो इन ब्रीफ वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ वर्क डन इज नोन एज इंटेंसिटी. ऑन द अदर हैंड, वॉल्यूम इज टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग सेशन. एक सत्र में कुल किया गया कार्य कहलाता है वॉल्यूम. तो ये दो शब्द थे, इंटेंसिटी, स्पीड, वॉल्यूम इज टोटल वर्क डन. इन दोनों को ही, इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ही, इन दोनों को ही दो विभिन्न उपभागों में विभाजित किया गया है. These two words, intensity and volume, are also subdivided into two subparts. That is intensity and density. Intensity means speed of work done, as we have discussed. But we know that, हम सब जानते हैं कि निरंतर बहुत अधिक अवधि तक हम किसी भी बहुत अधिक गति के साथ प्रशिक्षण सत्र को नहीं कर सकते हैं. We have to take rest in between. So density is the rest period between the two sets of intensities. और दूसरी तरफ वॉल्यूम is also subdivided into two subparts, duration and frequency. Duration means that is time, or in the language of sports training that may be a distance also. तो इसके डिक्शनरी मीनिंग पर हम ना जाएं. Duration means distance or time. Frequency means number of repetitions, कि how many times we repeat the same type of activity. That is, so it is very essential for each and every sportsman about the meaning of these four terms, about the concept of these four terms: frequency, duration, density and intensity. Since I will discuss in detail during the principles. ट्रेनिंग इफेक्ट, प्रभाव कैसे पड़ते हैं. आज के दिन हर व्यक्ति चाहता है कि एक तत्काल प्रभाव की अपेक्षा करता है. We always expect the immediate effects, but the training has three different types of effects. कोई भी हम व्यायाम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज सेशन करते हैं, उसके कोई एक प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ते हैं. There are three different types of effects. We know that. First one is known as immediate effect, तत्काल प्रभाव. It means the effects that takes place during and immediately after a training session. कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान या प्रशिक्षण सत्र के तत्काल बाद, तुरंत बाद जो प्रभाव पड़ते हैं, वो कहलाते हैं immediate effects. लेकिन the training has delayed effects also. Delayed effects means final outcome of any training session. That is the main outcome. It means that may occur after 2, 3, 4, 5 days or even after weeks. But the most important type of effect is known as cumulative effect. Cumulative effect means result of several sessions or even phases. Since during our training we do not do a single type of activity, हम किसी भी ट्रेनिंग में एक प्रकार की गतिविधि को नहीं करते हैं. We do different types of activities. We do speed activities, we do endurance activities, we do agility exercises, we do flexibility exercises. So cumulative effect, in conclusion we can say that cumulative effect is the sum of the effect of all type of training sessions, all type of training activities. So
we should not expect only immediate effects. We should wait for delayed as well as cumulative effects during training session or during the activity if we are performing to improve our fitness. तो ये थी ट्रेनिंग के इफेक्ट की बात. अब थोड़ा स्लोली बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए, कि किन किन सिद्धांतों पर हमें प्रशिक्षण करना चाहिए, किन किन सिद्धांतों पर आधारित हमारा प्रशिक्षण सत्र होना चाहिए. तो ये बात करते हैं. Improving performance is not just about training more. Competitions need to follow a carefully planned training programs. इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हम जितनी अधिक ट्रेनिंग करेंगे उतना ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. एक केयरफुली प्लान्ड जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उससे ही हम अपेक्षा कर सकते हैं इंप्रूवमेंट का, हमारी परफॉर्मेंस में, हमारे प्रदर्शन में सुधार का. सो इट शुड बी केयरफुली प्लान्ड. तो केयरफुली प्लान्ड तो तभी हो सकते इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग. यदि हम प्रशिक्षण के सिद्धांतों को अपनाएं तभी केयरफुली प्लान्ड की श्रेणी में रखा जा सकता है, अदरवाइज दैट विल बी कंसीडर्ड एज इल प्लान्ड. तो कौन कौन से इस प्लानिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें. तो सबसे पहले बात करते हैं, बिफोर डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम one need to ask the following questions about the individual. कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति जिसका की फिटनेस में इंटरेस्ट है, want to improve his or her fitness. विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मस्तिष्क में उपजते हैं. Different types of questions arise in the mind, and these questions I have listed few questions. The questions may be, what is their initial level of fitness की, इनिशियल लेवल हमारा फिटनेस का क्या है, हाउ ओल्ड आर दे, वो किस उम्र के हैं, आर दे मेल और फीमेल, व्हाई डू दे वांट टू ट्रेन, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करता है, कोई फिटनेस को इंप्रूव करने के, सबका पर्पस अलग अलग होता है, कोई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करता है. व्हाट इज देयर एम ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन. So these are the questions we should be asked when planning any training. One have to apply the principles of training. The principles can easily memorized using the memory aid sport. Each alphabet has a meaning. S, P, O, R, T. It means there are 5 different principles given by eminent personalities from the field of physical education and sports sciences. And these principles are, first one is the principle of specificity, second one is the principle of progression, third one is principle of overload, fourth one reversibility, and fifth one is tedium. So these are the 5 principles, and these principles should be followed during a training session. तो एक एक की चर्चा करते हैं. शुरू करते हैं स्पेसिफिसिटी से, शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी. One must do a specific type of activity to improve specific part of the body in a specific way. There are 3 different words. We have to concentrate ourselves on these 3 words. Type, it means type of activity. What type of activity we should do, and about part, which specific part our objective is to improve which specific part, and the third is ways. It means what type of specific ways should be included. Since we do some exercise to improve our health related fitness, some type of exercises we do to improve our endurance, we want to improve our flexibility also. So specific type of activity should be adopted to improve a specific part of the body, and we have to adopt the specific way. Second principle is progression. According to this principle, progression means gradually increase the amount of exercise we do. It means directly every day we should not increase our training load or a load. When a performer
first starts exercising, their level of fitness may be poor. It is a possibility. If we increase the training too quickly, the body will not have time to adapt. This may result in injury. Slow and steady progress is the best way forward. It means, in conclusion, as per this principle, इस सिद्धांत के अनुसार, a particular time is required for adaptation purposes. Without adapting a particular load, we should not improve the load. After proper adaptation, we have to improve. It means it should be increased progressively, gradually, not in a direct way. Next one is overload. The principle of overload. Overload is also required for improvement purposes, especially to improve sports performance. So, fitness can only be improved by training more than you normally do. It means we have to do more than our normal level. Otherwise, we should not expect about improvement of the performance. Unless the body is subjected to increased demands, improvements in physical fitness will not be made. It means if a physical fitness program is to be effective, it must place increased and specific demands on the body. If training levels remain the same, it means if we do the same type of exercises as per our normal level, then the program will only be maintaining the participants' level of fitness, not improving. It means after doing this type of activity, after doing the activities as per our normal level, we can expect to maintain our physical fitness, but we can't expect for the improvement of our level. So for improvement purposes, the principle of overload should be followed. It means we have to do more than our normal level. This is the most important part of my presentation. ये मेरे प्रस्तुतिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. Overload. The FITT principle, FIT principle. What do you mean by this? There are 4 ways to achieve overload in an exercise program. It means this FIT principle will explain how to achieve the overload. जो सिद्धांत था ओवरलोड का सिद्धांत, इसको फुलफिल हम कैसे कर रहे हैं, यह निर्भर करता है FITT प्रिंसिपल पर, FITT सिद्धांत पर. They can easily be recommended using this 4 alphabets FITT. Each alphabet has a meaning. Each alphabet has a specific meaning. Let us start with the first. F means frequency. As we have discussed earlier, पहले चर्चा कर चुके हैं प्रस्तुतिकरण के दौरान कि frequency means number of repetitions, how often we train. Next one is intensity, how hard you train. It means we have discussed earlier that during the training load, intensity means speed of work done. And next one is the third alphabet is time. Time is duration, how long you train for. And the last alphabet T is known as type. It means kind of training you do. So we should take care about these 4. That is frequency, intensity, time, and type. How we should take care? Slowly we will discuss. Let us start with the first alphabet, frequency. The National Institute of Health and Clinical Excellence suggests that to maintain health, one should do 30 minutes of moderate exercise 5 times a week. It means उच्चतम लाभ के लिए और एक अच्छे सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सीलेंस ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया है कि कम से कम हम 30 मिनट एक्सरसाइज करें रोज दैनिक जीवन में. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वी शुड अडॉप्ट मॉडरेट इंटेंसिटी. हाई इंटेंसिटी से भी ना करें, लो इंटेंसिटी से भी ना करें, केवल मॉडरेट इंटेंसिटी से करें. और जो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए दैट शुड बी 5 times per week. Training is best done regular rather than at random intervals. अब एक हम जो फिटनेस लेवल के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रैंडम इंटरवल्स के बाद करते हैं, रैंडमली करते हैं, जब मन में आया तब किया. नो,
इट शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली। क्यों, आगे चर्चा होगी। अगर रेगुलरली नहीं करेंगे तो प्रीवियस लेवल को अटेन करने में कितना समय लगता है, बहुत कम। अचीव करने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन जो प्रीवियस बीच में रेस्ट के साथ कि कितने समय में हम अपने नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसको जानना भी जरूरी है। आई विल डिस्कस लेटर। अगला अल्फाबेट है intensity. So to understand this point, we should have an idea about two types of respirations: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration is, it means the respiration with oxygen. It means with adequate oxygen when exercise is not too fast. At a constant steady rate, the heart can keep the muscles fully supplied with oxygen. It means during aerobic respiration, adequate amount of oxygen is supplied at tissues level. On the other hand, anaerobic respiration means without oxygen. Without oxygen शब्द appropriate नहीं है. It means we can say that in presence of inadequate oxygen. Since in the absence of oxygen, no activity can be performed. So if the exercise is fast or intense and done in short burst, the heart cannot supply oxygen to the muscles as fast as cells are using it. So it means in brief, we can say that aerobic respiration means in presence of adequate oxygen. On the other hand, anaerobic respiration means in presence of inadequate oxygen. लेकिन हम तो बात कर रहे थे इंटेंसिटी की, जो कि FITT प्रिंसिपल्स पर आधारित है. तो इस इंटेंसिटी मींस, intensity refers to the how hard. It means we have discussed earlier, is it the speed of work done? A good way of to measure intensity is to monitor a performance heart rate. It means we have to monitor our heart rate during a training session. प्रशिक्षण सत्र के दौरान हमें अपनी हार्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ेगा. किस सिद्धांत पर आधारित, उसकी बात करते हैं. The harder you work, the faster your heart beats. It's natural. Heart rate can indicate which energy system is being used. कि एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन किसका उपयोग हो रहा है, यह बाय द हेल्प ऑफ हार्ट रेट. दिस इज इंडिकेटर. हार्ट रेट इज एन इंडिकेटर कि which system is being used. So maximum, we should take care about the principle of maximum heart rate, MHR. In order to train the correct energy system, you need to calculate your maximum heart rate. कि हम अपने किस एनर्जी सिस्टम को यूज कर रहे हैं और करेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक सटीकता से उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट की गणना करनी होगी. Our maximum heart rate is the fastest that your heart can beat. It means it is the fastest limit of the heart. It depends on your age and can be estimated by using the following formula. So to calculate maximum heart rate, the following formula should be kept in the mind. This is maximum heart rate is 220 minus age. It means the individual of 20 years of age is having the maximum heart rate of 200 only. It means 220 minus 20, that is 200. Next one is, if a performer wishes to change their aerobic system. अब एक सटीक बात, एक मुद्दे पर आते हैं. यदि कोई व्यक्ति विशेष, यदि कोई भी स्पोर्ट्समैन एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहता है, तो वी शुड मेंटेन आवर हार्ट रेट to 60 to 80% of the maximum. एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में हम बात कर चुके हैं कि 20 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 200, क्योंकि मैक्सिमम हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 220 माइनस एज. और उस दशा में यदि वो व्यक्ति विशेष अपने एरोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहता है, उस दशा में उसको अपनी हार्ट रेट को रखना होगा 60 से 80% के बीच, मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 से 80% के बीच. इट मींस 120 से 140, 160 के 120 से 160 के बीच
रखनी होगी उसको यदि उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है तो। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, if a performer wishes to train their anaerobic system, they should train in between 80 to 90% of their maximum heart rate. उसी व्यक्ति विशेष का जो कि परिकल्पनापूर्ण हमारा उदाहरण था कि जिसमें कि एक व्यक्ति विशेष की मैक्सिमम हार्ट रेट है 200, तो यदि वो एनारोबिक सिस्टम को ट्रेन करना चाहता है उस दशा में उस व्यक्ति विशेष को अपनी हार्ट रेट ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग सेशन रखनी होगी 160, 80% हुआ 200 का, 160 to 180 बीट्स पर मिनट। लेकिन कितनी देर रखे? The precise percentage level you train at will be based on upon the current level of our fitness. That depends on our fitness level also. Suppose I categorize the individual to two different parts. यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है दो, एक एग्जाम्पल लिया गया है अनफिट परफॉर्मर का, दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है फिट परफॉर्मर का। जो अनफिट परफॉर्मर है, if looking to improve their aerobic fitness, would train at 60% of the maximum heart rate. On the other hand, यदि कोई fit performer है, looking for the improve their aerobic fitness, would train at like 80% of the maximum heart rate. So selection of this target level also depends on our fitness level. Next is 80 to 90% of maximum heart rate. Training in the anaerobic zone increases strength and power. If any sportsman, if any individual, if any performer want to improve strength or power, in that case, he or she has to maintain maximum heart rate in between 80 to 90%. But यदि कोई व्यक्ति विशेष एंडोरेंस इंप्रूव करना चाहता है, स्टेमिना इंप्रूव करना चाहता है, उस दशा में 60 to 80% मैक्सिमम हार्ट रेट को मेंटेन करना, मैक्सिमम हार्ट रेट का मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट, द प्रैक्टिशनर्स इंटरेस्ट, अभ्यासकर्ता के रुचि पर निर्भर करता है कि वेदर ही और शी वांट टू इंप्रूव स्ट्रेंथ और पावर और ही और शी वांट टू इंप्रूव एंड्योरेंस। इट मींस long type of long duration activity. Last one is time. The last alphabet denotes time. Intensity will affect the time or duration of each training session. The length of session required to achieve improvement depends on how hard a performer is training. It means this point should be kept in mind. To achieve improvements in aerobic fitness, if we want to improve aerobic fitness, one should aim to spend at least 20 minutes in a target zone. और target zone की हम बात कर चुके हैं कि on the basis of our two type of fitnesses कि aerobic fitness improve करना चाहते हैं, anaerobic fitness, तो यदि हम aerobic fitness improve करना चाहते हैं, जो target zone था, जो मैक्सिमम हार्ट रेट के प्रतिशत के आधार पर जिसकी गणना की गई थी, उसको हमें जो रिक्वायर्ड जोन में कम से कम 20 मिनट रखना होगा। टू अचीव इंप्रूवमेंट्स इन एनारोबिक फिटनेस, ऑन द अदर हैंड, will need to spend relatively little time actually exercising. Their sessions are likely to consist of many short high intensity bursts with lengthy rest in between. It means we have to do at high intensity but with a longer rest periods in between. हम छोटे छोटे अंतरालों को high intensity के साथ करेंगे, लेकिन we have to take rest, we have to take long rest in between the two sets of intensities. Next one is type. If one's aim is simple health related fitness, यदि कोई व्यक्ति विशेष केवल health related fitness improve करना चाहता है, the type of exercises you do does not matter very much. कि किस प्रकार कुछ भी कर, किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं, कि हमें किस टाइप की एक्टिविटी का चयन करना है उस पर बहुत अधिक बल देने की बात नहीं है, but it just needs to raise your pulse in the aerobic zone about 20 minutes. चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे किसी भी एक्सरसाइज से करें,
एरोबिक एक्सरसाइज है, डायनामिक सूर्य नमस्कार है, रनिंग है किसी प्रकार से, तो उसमें टाइप ऑफ एक्सरसाइज मैटर नहीं करता। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में मैटर करता है कि एरोबिक जोन में कम से कम अपनी पल्स को, टारगेट जो पल्स है उसको 20 मिनट्स तक कम से कम रखें। ओवरलोड कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, you could lift the same weight but in a different way and using different muscles. Unfortunately, most of the adaptations which result from training are reversible, जिसकी मैं पहले बात करना चाह रहा था मैं, कि ऐसा नहीं है कि आज हमने ट्रेनिंग लोड किया, प्रशिक्षण भार किया और केवल आज नहीं, हम बहुत अधिक समय से कर रहे हैं और बीच में रेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे जो आरंभिक अवस्था थी, जो स्टार्टिंग लाइन थी, जहां से हमने शुरू किया था, वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। दिस सिंपली मीन्स अनलेस यू कीप ट्रेनिंग एनी फिटनेस गेन्स विल बी लॉस्ट। लेकिन गेन करने की अवधि में और लॉस्ट की अवधि में, उसको खोने की अवधि में बहुत अधिक अंतर है। एज पर द रिसर्च स्टडीज, जो भी अनुसंधान कार्य, शोध कार्य हुए हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने है, द इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। एंड्योरेंस कैन बी लॉस्ट इन a third of the time it took to achieve। एंड्योरेंस को अगर यदि इंप्रूव किया, मान लीजिए हमने 3 महीने की एक कठिन परिश्रम के बाद एक एंड्योरेंस लेवल को इंप्रूव किया है, जो 3 महीने के अंतराल के बाद हमने इंप्रूव किया है, लेकिन आरंभिक अवस्था में पहुंचने के लिए उसका 1/3 पार्ट ही काफी है। 1 महीने में हम आरंभिक, यानी अगेन वी हैव टू स्पेंड 3 more months, दोबारा से हमें 3 महीने और लगाने पड़ेंगे उस अवस्था में पहुंचने के लिए। सो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस ऑल्सो। स्ट्रेंथ डिक्लाइंस मोर स्लोली, एंड्योरेंस क्षीण अधिक तेज गति से होती है, स्ट्रेंथ डिक्लाइंस विद स्लो इन कंपैरिजन टू एंड्योरेंस, but lack of exercise will still cause muscle to atrophy। It means muscle size may reduce। अब इसकी बात करते हैं। When planning a training program, it is important to vary the training a bit to prevent performance becoming bored। So different types of activity should be included। If every training session is the same, केवल हम प्रशिक्षण की बात क्यों करें, दैनिक जीवन में भी एक ही प्रकार का कार्य हम निरंतर करते रहते हैं तो बोरियत होने लगती है। सो ए परफॉर्मर कैन लूज एंथुसियाज्म एंड एज वेल एज मोटिवेशन फॉर ट्रेनिंग। उसके लिए वी शुड इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स वी शुड यूज। सो we should take care about this also। It sometimes be difficult to avoid GDM while obeying the first principle specificity। Especially कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कोई एक विशेष प्रकार की क्षमता विकसित कर रहा है, उसके लिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्योंकि उसे एक विशेष प्रकार की फिटनेस चाहिए। तो उसमें तो एक डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी। Next part is moderation in training। Moderation means achieving the balance between not training and overtraining। Overtraining is also harmful। Achieving the right balance is very important। It means there should be balance between low and high level of training। It means we have to do at optimal level। Without proper rest and recovery time, performance can become too tired and the performance decreases। It means, since we know that after every training session, the phase of super compensation arises, and after with proper rest, too much rest is harmful as well as lack of rest is also harmful। So we have to take optimal rest। It means there should be proper balance between load and recovery। Proper recovery should be given to the individual, but it should not be more than required। Even worse, overtraining can lead to injury। This can occur through stressing the joints and tissues। This is the important, we should take care about this।
open window theory. What do you mean by open window theory? Nowadays, आज के दिन इस विश्वव्यापी महामारी में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने से अधिक इंटरेस्ट हमारा, रुचि हमारी है टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को हम, इफ वी डू इंटेंस एक्सरसाइज, यदि हम कोई भी एक्सरसाइज विद हाई इंटेंसिटी करते हैं, द ओपन विंडो अकर्स, और प्रशिक्षण सत्र, यदि हम हाई इंटेंसिटी का प्रशिक्षण सत्र करते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण सत्र के बाद एक ओपन विंडो घटित होती है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस ओपन विंडो इज 3 to 72 hours. Ladies and gentlemen, during this open window our body becomes very sensitive to invading organism. जो आक्रमण कर, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो संवेदनशील बन जाता है, और जो आक्रमणकारी जीवाणु है हमारे शरीर पर बड़ी आसानी से अटैक कर सकते हैं. तो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस. सो नाउअडेज इन दिस पेंडेमिक, आज के दिन इस दशा में, इस विश्वव्यापी महामारी में, जहां हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, उस दशा में इंटेंस एक्सरसाइज न करके वी शुड डू एक्सरसाइज विद मॉडरेट इंटेंसिटी. सिंस मॉडरेट इंटेंसिटी में ये ओपन विंडो भी नहीं होगी और हमारी बॉडी सेंसिटिव भी नहीं होगी इन्वेडिंग एजेंट्स के प्रति, और दैट विल इंप्रूव अवर इम्यूनिटी, दैट विल इंप्रूव अवर innate immunity. And several clinical researches revealed that by doing the exercise with moderate intensity, our leukocytes improves, our neutrophils improves, our basophils improves, our eosinophils improves, and these plays a vital role in our innate immune system. हमारे innate रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाते हैं और इनकी मात्रा बढ़ती है. So suggestion given by eminent scholar is we should perform exercises nowadays with moderate intensity. I have prepared this presentation on the basis of these literatures. I have given the references also. Again, I express my sincere thanks to the organizers for providing me an opportunity to speak in front of you. If any individual want to ask any type of question, यदि आप में से कोई भी को किसी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, you can ask any type of question. Now over to the organizers, please. Thank you. Thank you, Dr. Rajiv Chaudhary, sir. It was very brief and impactful explanation, which I'm pretty sure must have resolved all the queries and doubts even before they arise, sir. However, if anybody still has any question or query, they can now ask from Dr. Rajiv Chaudhary, sir. You can write down your question in the comment section so we can answer your question. So we will wait for 1 minute for the question. Participants, I request you, if you have any doubt or query, you may ask the question. So one question from Ranita Adak. Is open window theory applicable for every age? Yes, as per my knowledge, it is applicable for every age, since several clinical researches has been conducted on this. But this is applicable only in case of intense exercises only, not only for low and moderate exercises. If we do with intense exercise, the open window theory occurs. If the individual of any age group perform the exercises with high intensity. Sir, no, there is no question.
participants, I request you again, if you have any doubt, you can clear from Dr. Rajiv Chaudhary sir. हिमांशु थापा जी मैडम लिख रहे हैं कि आप हिंदी में बात करें तो अच्छा होगा। हिमांशु जी बात तो पूरी हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश इसमें हुई हो, अब तो बात जी हो सर। चुकी है। I request you हिमांशु थापा सर, if you have any question, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। So maybe there is no doubt, so we can proceed further. Thank you so much sir. Sir, डॉक्टर बल्ली नमस्कार। डॉक्टर बल्ली सर जस्ट वेट, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू डॉक्टर जैस सर, डॉक्टर बलजिंदर सिंह बल सर को अनम्यूट कीजिए, को होस्ट बनाइए सर उनको। बलजिंदर सर, his ID name is Baljinder Singh. बना दिया मैंने उनको को होस्ट। I request you, Dr. Baljinder Singh Bal, kindly unmute your mic. Voice is audible? Yes, sir, you are audible now. राजीव जी बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू। Now, it is for the information of the participants that we will undertaking panel discussion with our esteemed panelists on sports, physical stamina and fitness in the contemporary times. Now, I first call upon to Dr. Nishan Singh Deol, Head Department of Physical Education, former Dean Faculty of Education and Information Science, Punjabi University, Patiala. Sir, I wish to have your expert view on, as we know that the people are getting more and more health conscious about health and fitness in these days, especially in this pandemic situation. So what new courses do you think can be introduced for journal public leaving the competitive edge out of focus? So how do you think the new education policy can be utilized towards this end? Hello. Hello. Yes, sir, you are audible now. Can you just simply ask once again what you were asking? I couldn't get you. Yes, sir. Sir, as we know that the people are getting more and more conscious related to health and fitness in these days. So I just want to have your views. What new courses do you think can be introduced for general public, leaving the competitive edge out of focus? Okay. Okay. First of all, I must congratulate the very college, PCCMST College, for hosting this webinar on this very honorable day, that
that will be rather tomorrow, and being here tomorrow will be a very busy day, and you had organized this webinar on the birth anniversary of legendary Dhyan Chand, a great hockey player. On this day, our country is celebrating it as a National Sports Day, and tomorrow all the national awards in relation to sports will be conferred to the great personalities who had achieved the heights in the arena of sports and contributed a lot for the upliftment of sports and for the nation also. On this day, like Dr. Rajiv Chaudhary was talking about the basic principles of sports training, and the entire scenario is nowadays looking about all these principles. Being nowadays we are fighting with a very fighting with the pandemic, that is COVID-19, and being this pandemic is one of the different type, and during this pandemic each and every person has got that they have to build up their immunity. As Dr. Rajiv was talking, we have to shield ourselves with the inner and outer strength also. Inner strength is your immunity, and the inner strength has to be built up. Otherwise, the survival of the human being is very tough, very difficult. And to build up the immunity of a human being, what we have to do, basically, if you have to concentrate on your health, आपको अपनी सेहत के बारे में ध्यान रखना है, then the health, from a health aspects, it is dependent on 4 pillars. 4 स्तंभों के ऊपर हमारी सेहत खड़ी हुई है, और ये चारों स्तंभ कौन से हैं? If you talk about these 4 pillars of health, number 1 is exercise, about which Dr. Chaudhary was talking in detail. He talked at length about this area. First pillar is exercise. Second exercise is mindfulness, that is meditation, concentration. In this area you have to concentrate a lot. Mindfulness, concentration, recitation, this is a very important, this is a second pillar of health, which each and every individual is ignoring this aspect. And third aspect is the individual's diet. Your whatever you have been eating, that is a third pillar. So you have to concentrate a lot, and you have to be very much cautious about the diet aspect of your now in these pandemic time period. So that's why we have been in social media or in print media or wherever we are following, we notice a lot of advertisement in relation to immunity booster diets also had been given, advertised in social media and other print medias. So this is because with the help of diet only, you can build up your immunity. And the fourth and the most important pillar of the health, on which this a very important aspect is standing, that is the sleep. Fourth aspect. So sleep is the most important, and we had been ignoring. हम सब इसको बहुत ज़्यादा neglect कर रहे हैं. And the research has shown, has proved that individual has to sleep. Not only human being, every living thing, living organism on this planet has उनको 7 से 8 घंटे की नींद जो है चाहिए एक adult के लिए. This has been recommended by the sleep study experts जो इसके ऊपर research कर रहे हैं. They recommend that 7 to 8 hours of sleep every individual should go. So उसके लिए हमारी जो refurbishment है, हमारी जो rejuvenate करना है हमारी strengths को, that for that you need to have
लेकिन आजकल की जो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन, उनका हमारा जो सर्काडियन रिदम, देयर इज वन टर्मिनोलॉजी सर्काडियन रिदम, और हमारा जो स्लीप साइकिल है दैट हैज बीन एंटायरली डिस्टर्ब्ड, उसको हम डिस्टर्ब कर चुके हैं। आज के यूथ हम अपने फैमिली में देख रहे हैं, दे जो नौजवान है वो रात को क्या करते रहते हैं, जागते हैं और दिन में सो जाते हैं। 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। दिस ये हमारा बायोलॉजिकल एक क्लॉक है दैट हैज टू बी रीफिक्स्ड, इसको हम रीशेड्यूल करेंगे। और दिस इज वन ऑफ द रीजन के रात को सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को अगर हम टाइमली प्रॉपरली नींद करेंगे तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स which has to be secreted, और वो हार्मोन्स हमारे रात को ही सीक्रेट होते हैं, और दैट आर ऑल दोस हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए। सो दिस इज वन एरिया ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एरिया के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का रोल क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज एक्सरसाइज यू हैव टू डू, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए वी हैव टू वर्कआउट, और ये बहुत जरूरी है, तभी हमारे हम बच सकते हैं। सेकंड इज हेल्थ, हेल्थ का सेकंड जो पिलर है दैट इज स्लीप, वो भी हमारे को तभी आएगी, डाइट भी हम तभी कंसंट्रेट कर पाएंगे, और मेडिटेशन भी। स्पोर्ट्स इस इसको हम कह सकते हैं कि योग इस जो इंडिया की देन है पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को, दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। तभी उसके कारण हम अपनी माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, क्रिएशंस, ये सारी क्वालिटीज को बिल्डअप कर सकते हैं। सो नो ये सारी चीजें को इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे हैड गिवन हाईलाइटेड, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2020, और इसके अंदर ड्यू रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन गिवन टू द एजुकेशन, because we need holistic development of individual, holistic growth of a child। इसीलिए हम उसको ये सारी करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर ड्यू कंसंट्रेशन हैज बीन गिवन in this new education policy। and curricular activities, पहले earlier it used to be curricular activities in education policies, इसकी कोई gradation नहीं थी, individual उनको इसका benefits नहीं मिलता, but now in this new education policy and in the education system, teacher training courses, इसके अंदर भी इसके ड्यू एडवांटेज, इसके क्रेडिट्स they will be started giving, उसके क्रेडिट्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो हैं they will be following those, going for those कि हमें ये क्रेडिट्स ले लेने चाहिए, स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे, we will be getting this much of credits, तो हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली will improve। इवन साइंस ग्रेजुएट जो कर रहा है उसको भी इसके स्पोर्ट्स के जो है क्रेडिट्स, इफ दे विल बी गोइंग फॉर दैट, उसको उसका एडवांटेज मिलेगा। एंड फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट। एंड दिस पॉलिसी हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो कंट्रीज हैं जो अच्छा कर रही हैं स्पोर्ट्स में, the countries like US, Canada, all European countries, England, ये सारी countries में this is the criteria, and that's why all the parents are running behind their kids to participate in some of the sports। उसके दो advantage हैं, एक कि उनके अंदर कोई stress नहीं होगी। This is one of the reason कि हमारा youth इतना stressful हो चुका है कि उसके अंदर इतनी stress का कारण क्या है, because they are not participating, उनके अंदर जो energy है उसको वो निकाल नहीं पा रहे। सो इसलिए हमारे को फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के जो कोर्सेस हैं इनका एडवांटेज जो है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना ज्यादा है कि इसके इन द कमिंग ईयर्स इसके बिना सर्वाइवल ही नहीं है। एंड दिस पैंडेमिक हैज प्रूव्ड कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा, बहुत बढ़िया है, हम अपने सिटीजन्स को कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। दिस वी ऑल नो, वी अंडरस्टैंड, वी हैड इवैल्यूएटेड कि हम अपने हेल्थ सिस्टम में कितनी इंप्रूवमेंट्स हमारे को अभी चाहिए। एंड अगर हम वहां पर इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ ही द एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ लॉट ऑफ रीवैम्पेशन, उसको बहुत सारा चेंजेस कर रहा है। एंड दिस एजुकेशन पॉलिसी, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर स्पेसिफिकली दे हैड गिवन के स्पेशल स्ट्रेस के योग एंड स्पोर्ट्स इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एंड in the coming years because of this, और यही हम experts बात करते हैं
कि हमारा स्पोर्ट्स, हम हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, हमारे को मेडल्स नहीं मिल रहे ओलंपिक्स में। क्यों नहीं मिल रहे? द रीजन इज कि अब हमारा जो स्कूल सिस्टम है वहां पर स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो खत्म हो चुका है, और वो खत्म होने के कारण हम अपने खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमारा स्कूल का स्पोर्ट्स सिस्टम, करिकुलर जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वहां पर बिल्डअप नहीं होंगी, तो इट इज नॉट कि स्कूल और से निकलते ही आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, फैक्ट्रीज हैं, वहां पर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे को स्कूल एजुकेशन से वहां से बिल्डअप करके we have to develop the sports culture in the society, and from these culture we what we have to extract out is the cream from those sports culture. जो बहुत जब mass participation होगा उसमें से cream निकलेगी, and cream will be participating with the flags in their hands, और Indian flag को लेके वो participate करेंगे, और at international level they will be representing India. जब बहुत सारे पार्टिसिपेट करेंगे ऑटोमेटिकली इट इज बट नेचुरल कि हमारे पास मेडल्स आएंगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम उसको अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सो दिस इज द रीजन के दिस गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक्सपर्ट्स ने उन्होंने टोटली रीस्ट्रक्चर्ड उसको किया है। जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इन दोनों को कंट्रोल करता है, एंड उसके अंदर 4 year एजुकेशन जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम दे हैड इंट्रोड्यूस्ड, they are going to introduce it in education programs also, in education and physical education. वो 4 साल का एजुकेशन प्रोग्राम, दैट विल बी ए प्रोफेशनल प्रोग्राम, और उसके बाद सिंपली यू हैव टू गो फॉर 1 year मास्टर्स, और उसके बाद you can go for research and whatever higher education you wanted to go for. So these are the what objectives this new education policy has set up, and I'm sure with the these objectives, with the all these academic institutes, the quality academic institute, the institute like this institute, the college which is hosting this webinar, ऐसे सारे क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स, दे विल बी प्रोमोटिंग एजुकेशन पॉलिसी इन टोटो, और उसके कारण हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ दीज सारी करिकुलर एक्टिविटीज दे विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, और उसकी इवैल्यूएशन होगी, एंड स्टूडेंट्स विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दीज प्रोग्राम्स। सो इसके कारण हमारे को एडवांटेजेस मिलेंगे। So these are some of the views which I wanted to share with all the participants. I'm thankful to Dr. Paramjit for giving me the opportunity, and to the host college for hosting this webinar. Thank you so much, sir. Very nicely explained. I hope queries of participants must have been resolved. Now coming further to Dr. Harmanpreet Kaur. Now I would like to request Dr. Harmanpreet Kaur to share your views online teaching, learning and training through software and its impact on students in current scenario. Kindly share your screen, ma'am. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Yes. Now. Yes, ma'am. My very congratulations and thanks to the principal ma'am, PCM ST College for Women Jalandhar, and Dr. Params to give me opportunities. And now I want to present, because to the time constraint, I directly present to the one software where we have the opportunities to teach our students, to give some training tips, give some training schedules and videos through these softwares. Yes, now is a screen shared with you. Is it visible? Hello? Not visible. Yes, it is visible. Not visible yet. Not visible yet.
Now is visible? No. Ma'am, there is an icon by the side of chat. Yes, I apply. Yes, share screen, I apply. Now? Yeah, now it is visible. Yes, ma'am. Now is visible? Yes, ma'am, clearly visible. And in this screen is having a code tantra, your virtual school minutes or any PPTs. Yes, how to attend the online classes through the My Class. So in this software is having a software is code tantra. Param, is it is visible the code tantra or visible the PPT? Yes, ma'am. Ma'am, you can show your PPT by showing the slideshow. Okay. And now is code tantra. Yes, ma'am, it is visible. Your virtual school minutes is visible. Ma'am, your PPT is visible only. Okay. So what is a software is like a code tantra. I'm just give you the name of the software, but how to pursue this software for the online classes. The software is online classes having, you can just click is a visit myclass.lpu if I hire this software. Then if your organization hire this software, then is your logins, and your login is having display is like this. In this pic, you just enter your registration IDs and password. After that, Ma'am, I request you kindly press the Control F5. Only F5 button to maximize your window. yes, now is yes, okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. The next step is view class and meetings. Then you click on the this software is having a view class meetings, courses, test, program labs, and help and support. So now after that, the timetable of the teacher is displayed on the software. After you click on the timetable, you have a class 10 to 11, 11 to 12, or 1 to 2. The timetable on that particular day is displayed, and having a calendar of the timetable is visible at the left side of the screen. And the green color is classes are held, and the gray color is classes are held, and the green color is classes are ongoing. In this software, we are join the class through this link, and then your microphone is allowed, and now the screen is visible to you. Here is one icon is having a action, and from the action is having a 3 icons in this: polling, and the second phase is presentation, and the third point is share external videos, which you can share practical classes, you can share some audio visual aids, you can share some sports skills oriented works, and some drills, so that the students are learned through the practical also as well as teaching. After you have some system of the polling system and public chat is very important in this software. You ask the queries from the students, and students give your some queries and doubts in the polling in the public chat. You have a one thing in this software is polling. The slideshow is show to you regarding this. And here is some polling options. You can poll the some questions is a MCQ based A, B, C, D, E options, and student
poll the answer is a correct manner or maybe a not correct, and then you have to identify the responses. How many students are give the right answer? Either the student is listen, either the student is not listen in online mode, and you are interact with the students, and you have the option over here is to mute, unmute and lock all the students, and you are also have the option to click and visibility of the students. Either the student is uh, on the system or physically present in the class, and after that you have some polling is to yes or no. If student have clear, then it's a yes. If student have any doubts, then the student is poll no. So here is some questions. You can also display. The student is say a polling. The answer is A, B, C, D. The result is display on the slides like this. If the student is 10 students say yes to the A answer, B answer, C or D, you can visible ki how many students are say right answer and how many students are poll wrong answers. So student having a one option is writing related to raise hands. So raise hand means student have a query and student have a doubt. So you can visible if a student is asked something. Yes. So the software is very helpful for us to the in this COVID-19 and lockdowns. The ecosystem is very good in this software, and no any problem in the thrumbling of the voice and any other things. If we are apply a Google Meet and Zoom Meet and we are facing some problems, you can enter the students in a while 150 or 200 about student is join the class at the same time. So I just want to share some software. Now Param is visible. Learn anywhere, teach and learn anywhere. Yes, Param ma'am. No, ma'am, it is not visible. Okay. New share and Ma'am, now it is visible. now is it visible? Yes, ma'am. Tantra, your virtual school minutes. Yes, ma'am, visible. Yes, the software is having a by the code. Tantra is now officially a government of India recognized startup, and you have to live meetings, join classes, assessments, platforms, virtually university and school classes. And the customer of this software is having in the India is most of the technologies institutions, engineerings, and one is the lovely profession university. So now a software, I log in this software through my classes. I'm just showing that from the beginning. Yes, the classes is timetable is visible to you, and you can join this class is a 1 to 2 my class.
So I hope now is open. Yes, yes, the software is open just before the 10 minutes of my class. I've joined my class. And microphone mute is access. Yes, now I want to share my presentations. Upload presentation over here. Polling system. This is a polling system. Yes, no, true, false, ABCD. These are the options. And the option is the external video. You can share the link and the video will be displayed. And you can share your presentation over here. Upload, browse the presentations. Yes, today is my class now. And I want to share my slide is duties of sports manager, like a sports management subject. Upload. Now the slide is uploaded. Duties of sports manager and the responsibilities of sports managers. And here is the option of the pollings, and just I slide is on the next step, then is the next sports management offices, and you can teach your lecture through software. And here when the students are joined, the list is over display. The student is joined and you can poll, custom the polls. You can also add some options, and you have some opportunities to record of the classes. I'm just leave this software because I just want to show one thing important. Okay, you want to see your previous classes, then is the option is having a previous classes of the 22nd August, and you have to option to click, and the attendance of the students, and you have to view recordings of your lectures, and you have the present absentees names, and your summarize is the activity of the student participation is high. And if a guest is coming visit your class, then the guest, two guests are visit my class, is the class is going in very well manner or not. Then is some is polling system. The student is poll my question and answers on this time, and having a brief agenda. If you put an agenda to the students in this class, you have an option. So thanks, and very thanks from my side. So if you give us some practical input to the students, you can share with the some training schedules. Student prepare a videos, and student prepare a YouTube channels, and give the performance through the channels, so that it is a very effective manner to assess the students in the practical classes as well as the theory classes. Once again, I am very thankful to, and congratulations to the National Sports Day, and to the PCM College principal ma'am, and Param, and all dignitaries are available, and my seniors, Dr. Baljinder Singh Bal, and Dr. Nishan sir, and Rajiv Chaudhary. I'm again very very thanks to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful presentation for online classes. Now, I call upon Dr. Baljinder Singh Bal, our panelist, to deliberate. I just want to coming further on this very special talk. Dr. Baljinder Singh Bal, Assistant Professor, UGC Research Awardee,
recipient of minor, major, and research award by UGC GNDU Amritsar. Sir, I just want to ask one question. In these days, these are many sports universities being established in India, such as, for example, Imphal, in Gandhinagar, Haryana, and in Patiala also. So, how will the courses being offered in these universities can be different from those already being offered, and what changes would you personally like to suggest? My voice is audible. Yes, sir, your voice is audible now, and your video as well as very clear It will to be all the appreciated if you could. participants. It will be appreciated if you could repeat the question once again. Yes, sir. It will In be. these days, sir, I am audible. Am I audible to you, Audible. sir? Yes. 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 Sir, my question is, in these days, there are many sports universities being established in India, Imphal, Gandhinagar, Haryana, or in Patiala. So, how will the courses being offered in these universities be different from those already being offered, and what changes would you personally like to suggest? Okay. Good afternoon to everybody. The question under consideration needs an understanding of certain interconnectivity. Before I respond to your query, I would like to express my deep sense of gratitude and happiness on this auspicious day. I really feel elated and gratified to be the part of this venture. Firstly, I would like to thank the PCM SD College for Women Jalandhar for providing the podium, and congratulate the Department of Physical Education and Sports in particular under the able leadership of Dr. Paramjit Kaur for holding such a noble core. Now, coming to the question under consideration, I would like to discourse my conversation with a Punjabi couplet. It reveals that कुछ रिश्वतां कुछ सियासतां कुछ रिश्वतां कुछ सियासतां कुछ साका संबंधियां दा मोह साडे मुल्क दी खेडां नूं ते सियासतां ने खा लिया कुछ रिश्वतां कुछ सियासतां कुछ साका संबंधियां दा मोह साडे मुल्क दी खेडां नूं ते सियासतां ने खा लिया अर्जुन दी तीरंदाजी नूं एक सिखाउंदा पिया है मल्ला ते गुरु द्रोणाचार्य चप्पू चला रहे. To my knowledge, perception and analysis, I am a firm believer of a school of thought that the concept of sports universities in India is the concept of duality. Let me repeat, the concept of sports universities in India is the concept of duality. सादी भाषा में कहूं तो ये प्रतीत होता है कि जिस कदर देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की उत्पत्ति हो रही है, ना तो इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में कोई एकेडमिक विजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स और ना ही स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस डोमेन को पूरी तरह से सार्थक होता नजर आता हो. द रीजंस आर एनॉर्मस. अगर we are talking about the three main motives and visions, the very first is academic vision. Academics की बात की जाए तो ये statistics और आंकड़े ये रिवील करते हैं कि इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज का गठन हुआ है, उन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वो ही प्रोफेशनल कोर्सेस लगभग चल रहे हैं जो देश की दूसरी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, और देश में अगर जितने भी
शारीरिक शिक्षा के संस्थान है, उनमें भी इसी तरह के कोर्सेस चलाए जा रहे हैं जो इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रिवेल करते हैं। अगर बात की जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D गाइडिंग प्रिंसिपल्स की, तो ये प्रतीत होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू एलीट एथलीट्स के लिए आज तक डिवाइस ही नहीं किया जा सका है। एंड एट द एंड इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट जितनी भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होंद में है, जैसे कि आपने नाम लिया इम्फाल यूनिवर्सिटी का, गांधीनगर में यूनिवर्सिटी है और कई यूनिवर्सिटीज की उत्पत्ति हो रही है, तो इन यूनिवर्सिटीज में ना तो कोई ओलंपियन, ना कोई एशियन मेडलिस्ट, ना ही कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, किसी तरह के भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई प्रदर्शन जो इन खिलाड़ियों ने किया हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज ने ऐसा कोई खिलाड़ी, जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई आंकड़ा मेरे सामने नहीं आया कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिस मंतत्व और जिस गंतत्व के लिए बनाई गई थी वो कहीं यथार्थ और सार्थक सिद्ध होती हो। ऐसे में ये कहना यथार्थ ही प्रतीत होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज इन ड्युअलिटी। द कॉन्सेप्ट इज टू बी रीडिफाइंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग sports specific excellence and to develop the concept of broad basing of sports at basic level to bring athletes at the international podium। हजारों साल नरगिस होती है अपनी भनूरी पे, हजारों साल नरगिस होती है अपनी भनूरी पे, तब जाके होता है चमन में एक दिदावर पैदा। So with this word मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for being with us. So very lucid explanation by our respected panelist, Dr. Baljinder Singh Bal. So thank you once again, sir, for being with us in the panel discussion. Now I would like to invite our sports journalist from Delhi Ajit, Mr. Jatinder Sabi. Am I audible, sir? Am I audible to you, Mr. Jatinder Sabi, sir? Kindly unmute yourself. हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जतिंदर सर, मेरी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही है? हाँ, आ रही मैम, आ रही है। ओके सर, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਜ਼ਿਬਲ नहीं है, काइंडली यस सर। एक मिनट, ਹੁਣ आ रही? जी 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 सर। ਹੁਣ ठीक आ रही कि नहीं? जी सर। ठीक है? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है, बोलो। So participants, Mr. Jatinder Sabi sir will share his views regarding the National Sports Day events that we in this year will be conducted on through online mode, and this is in India for the first time. So sir, kindly share your regarding the National Sports Award on the eve of the National Sports Day in online mode. ठीक, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला मैं ਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਆ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੁਕਲਵਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਉਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਂਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵਾਰਡ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ Sir, sorry to disturb you. Sir, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ clear ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੈਮ? ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰ ਦੇ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ IPL ਖੇਡਣ ਗਏ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਵਾਰਡਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। Last but not the least, now I would like to invite Mrs. Baljeet Kaur, Senior Sai Hockey Coach from NIS Patiala. Ma'am, am I audible to you? हेलो Ma'am, am I audible to you? हाँ जी मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। Ma'am, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Yes, ma'am. Ma'am, I just want to ask from you that how can you make online coaching productive to players in this pandemic? हेलो Hello. हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून। सब तो पहले मैं PCM ST कॉलेज फॉर वुमेन जलंधर ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਪੋਸਟਡ ਐਟ NIS ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈ ਦੀ ਟੌਪ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੱਚੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਕੋਚ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੌਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਪਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਗਾ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਇੱਕ ਮੰਥ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ ਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ 9 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਚਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਚਿਸ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable views among us. Now, it is a matter of great satisfaction for the Department of Physical Education and Sports, PCMSD College for Women, Jalandhar, to announce overwhelming response from the participants and making this webinar a grand success. Now I call upon Madam Mrs. Alka Sharma, Co-Coordinator Fit India Movement of our college unit, to say a few words on the national webinar on National Sports Day. Over to you, Alka ma'am. Good afternoon, everyone. Mr. Narendra Modi launched Fit India movement on the occasion of National 2019.
because he believed, I suppose, that only a fit person, a fit family, and a fit society will pave way for a great and a new nation. The Fit India movement aims to encourage Indians uh, for fitness and sports in their daily lives for a healthy and fit lifestyle. I really salute Prime Minister Modi's macro vision, wherein the motto of Fit India movement remains to have a healthy generation, that is a healthy nation. I believe that he is focusing on healthy generations can only pave way to a healthy nation. The Prime Minister made a mention of Major Dhyan Chand, who is India's sports icon, who surprised, who enthralled the world with his fitness, stamina, and hockey stick. And Prime Minister further said that there is zero investment in Fit India movement, but we have unlimited returns. So fitness should be seen as a celebration in household movement that can overcome lifestyle diseases like diabetes, hypertension, etc. So Fit India movement creates fitness consciousness amongst countrymen to make India a fit nation. So just small changes in lifestyle can prevent lifestyle diseases. And so our institution too has been working on these lines, and we have formed a PCM SD fitness club with 22 members. They are part of this club, and on this basis we have been celebrating National Sports Day from the last year when it was announced by our Prime Minister Narendra Modi. And in the very first, on that very day, on that National Sports Day, we could involve walking at least 10,000 steps as was advised by our Prime Minister. And from that day onwards, in every month, we have been conducting plethora of activities like exercises and yoga and meditation for everyone in the camp. We have certain activities on certain themes like we have diet. Then we arranged a demonstration by our yoga instructor, Dr. Shwetang Singh Mishra, on yoga mudras and yoga asanas. And these activities have been organized by the Department of Physical Education and Sports. So on behalf of PCM SD Fitness Club of the college, I am thankful to all of you for sparing their time out of their busy schedule, and for the dignitaries too, because of their rich content which they deliberated upon. And I hope that their rich experience will go a long way in shaping the future of the department as well as of the students and faculty. So I'm thankful to everybody for the patient hearing during this webinar. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Mrs. Sangeeta Sharma to propose vote of thanks on the behalf of IQAC of the college. A really pleasant afternoon to one and all. Am I audible? Am I audible to all? Yes, ma'am. First of all, I congratulate you all for this National Sports Day in the remembrance of our legend, Major Dhyan Chand. And we are approaching towards
the end of this webinar, I take the opportunity to articulate my deep sense of gratitude to all the persons without whom this webinar would not have been feasible. I would like to express my deep sense of thanks to our worthy special guest, Mrs. Rajveer Kaur. She's a Arjuna awardee, former Indian hockey captain, for sparing her valuable moments, leaving aside her many opportunities for her wholehearted support in successfully leading this event and for sharing her relevant knowledge and precious time with us. I express my heartiest thanks to eminent resource person, Dr. Rajiv Chaudhary, professor in physical education, for enlightening and enriching us with his thought-provoking ideas uh, about keeping our body fit during this pandemic. I express my deep sense of appreciation for the renowned panelists of today's webinar, Dr. Nishan Singh Deol, Dr. Baljinder Singh Bal, Dr. Harmanpreet, Dr. Jitinder Sabi, Dr. Baljeet Kaur. All of the dignitaries have illuminated all of us with their nuggets of knowledge and their practical applicability in today's situations, today's scenario. Very significantly, I pay my sincere regards to Honorable Madam Principal, Dr. Kiran Arora, for being constant support and guiding hand at all the times. I express my sincere thanks, special thanks to Dr. Jaising for his untiring support, who despite inconveniences have responded to our request very humbly for successfully conducting this webinar. My special thanks to all the participants who have responded to our request and attend this webinar and patiently listening to all. I convey my extreme thanks to Mrs. Alka Sharma, Head PG Department of Commerce and Management, and the co-convener of Fit India Movement Club for their consistent efforts, and especially Madam Paramjeet Kaur, Head Department of Physical Education, the convener of Fit India Movement Club, to convene this fruitful and valuable event. Let me once again reiterate that without you all, we will never have the courage to dream and passion to bringing about this webinar as a mesmerizing and exhilarating experience for all of us. We hope that the webinar would be fruitful in content and lasting in consequence. Now I request Madam Paramjeet to conduct for further proceedings. Thank you all. Madam Paramjeet. Thank you, ma'am. Now, proceeding further, now let me seek, now, dear participant, let me seek the permission from our worthy principal of the college, Dr. Mrs. Kiran Arora, for winding up the webinar. Yeah, go ahead. Go ahead, yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving me permission. Dear participants, thank you for your valuable participation and it was a very information session today on the in the national webinar on National Sports Day. So now I am sharing a feedback link with you all. Kindly fill it carefully because it will be the base of your e-certificate. So kindly fill your domain and your spelling of your name. Here I am sharing a link with you all.
Dear participants, your e-certificate will be provided to you within working 15 days. So don't be panic about e-certificate. We will provide your e-certificate in your email ID within working 15 days. Dear participants, after filling your feedback form, you can leave the meeting. So I request you to kindly fill your feedback form. The feedback link is given to you in the chat box. So Dr. Jaising sir, I request you to kindly share the feedback link in the in the YouTube channel chat box. Okay, okay, ma'am. Telegram. Thank you so much, sir. मैम एक बार YouTube में देखिए सही आ गया क्या? यही लिंक था ना? Yes, sir. होस्ट में कॉल म्यूट करो तो मैं बोलूँ. Thank you, Jai Singh, sir. Thank you. You have always been a constant source of inspiration to us, and thanks for your persistent support. Thanks for your always persistent support to SD College for Women Jalandhar. We are thankful for the technical support provided by you. Thank you very much, sir. It's my pleasure, ma'am. Sir, I Sir, am I am giving giving a a special special thanks thanks from the from the Department of Department of Physical Physical Education Education and and Sports. Sports. You, You you were the you were backbone the of the backbone of webinar the webinar today. today. So, sir, So, really, I sir, want really, to I want thank to you. thank you. Thank you so Thank you so much, much, sir. sir. Thank you, sir. So thank you, ma'am. Most welcome. Thank you so much, sir, for being with us, and you are very such a cooperative Personality. personality. It's my pleasure, ma'am. देखो म्यूट मेरे को चुप. मेरे Now I would like to invite Mrs. Alka Sharma ma'am to give a vote of thanks to our worthy principal from the fitness club of PCMSD College for Women Jalandhar. Over to you, ma'am. Mrs. Alka Sharma, Head PG Department of Commerce.
Thank you very much, ma'am, for your constant inspiration to us. You have always been a source of inspiration to us, and your patronage that the college has been achieving heights. And this seminar we could organize. I really thank you from the point of from Fit India movement and PCM SD Fit India Club for this webinar, for wholehearted support and always being with us at every time, giving us free hand also for organizing these seminars. So we are really thankful to you, ma'am, for the support. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mrs. Alka Sharma, co-coordinator, Fit India Movement of our college, PCM SD College for Women Jalandhar. And my special thanks to Mrs. Sangeeta Sharma, Head PG Department of Economics. And last but not the least, my many congratulations to you, our worthy principal ma'am, for such a wonderful webinar on the occasion of National Sports Day. Thank you so much, ma'am, for giving us permission for conducting such a grand, successful webinar. Thank you so much, ma'am. जय सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर दीजिए ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहे वेबिनार के बारे में या फिर अगर फीडबैक लिंक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनकी क्वेरी ले लेते हैं। तो इसलिए सर अनम्यूट कर दीजिए। मैं इसके भी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, इस सेटिंग में कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर पाए। How you can unmute yourself and speak. I'm to start. Problem आ रही है। The participants, you can leave the meeting. Only if you have any query, then only you can be part of this webinar.